माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग राउल्ट्स लॉ स्टडी करने जा रहे हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर ए वोलेटाइल लिक्विड्स। राउल्ट्स लॉ फॉर volatile liquids। डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो कि दो कंपोनेंट हैं मिक्सचर में। दो कंपोनेंट्स हैं किसी मिक्सचर का, और ये जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वह वेपर प्रेशर PA be the partial vapor pressure of A component and PB be the partial vapor pressure of B component। तो टोटल जो प्रेशर होंगे वह किसके बराबर होगा? PA प्लस PB के बराबर होगा। ये आपको जानकारी है इतना कि अगर दो कंपोनेंट है उस मिक्सचर में और दो कंपोनेंट, तो इसके कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होगा एक कंपोनेंट के कारण उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पी टोटल जो होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। इसको आपने स्टडी किया था डाल्टन्स लॉ में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। यहाँ हम लोग देखते हैं कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर is directly proportional to mole fraction of that component, अगर पार्शियल वेपर प्रेशर को हम लोग PA मानते हैं तो PA इक्वल टू PA वेरीज टू XA और PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA के बराबर होगा। ठीक है, ये P नॉट A जो है वह वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट है, इन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट ये है। सिमिलरली फॉर कंपोनेंट बी PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB और PB इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। ये एक इक्वेशन बना पहला और ये इक्वेशन दूसरा। अब दोनों इक्वेशन से इस वैल्यू को, इस दोनों इक्वेशन का जो वैल्यू है वो रख देते हैं इस इक्वेशन में। इसको इक्वेशन ऐसा करता है, फर्स्ट इसको मानते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो क्या होता है कि P टोटल बराबर होगा PA का, तो PA इक्वल टू है P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B प्लस PB है तो P नॉट B इंटू XB का। और हम जानते हैं कि XA प्लस XB जो होता है वो 1 के बराबर होता है, इसलिए XB इक्वल टू 1 माइनस XA। इस फॉर्मूला को हम लोग इसमें इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये चौथा इक्वेशन है। हमारा इक्वेशन क्या आएगा? P टोटल इक्वल टू P नॉट E इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB की जगह 1 माइनस XA हम लोग रख सकते हैं। अगर दिस फॉर्मूला इज क्वाइट यूजफुल। This is the fifth formula and this is final for the Raoult's law for volatile liquids। I hope you have understood all this। यहाँ हमने क्या लिखा है कि Raoult's law for volatile liquids। Suppose a mixture has two components A and B, which partial pressure is PA and PB respectively। So total partial pressure is equal to total pressure. Sum of the partial pressure is equal to total pressure। So partial vapor pressure varies directly with XA, mole fraction of that component।
So PA is equal to P naught A into XA. Similarly, PB is equal to P naught B into XB. XA plus XB is equal to 1, so XB is equal to 1 minus XA. Now, we will study ideal and non-ideal solution. Let us see. Ideal solution. Such solution which obeys Raoult's law is known as ideal solution. Ideal solution. It obeys Raoult's law. A solution that obeys Raoult's law over the entire range of concentration. Solution that obeys Raoult's law. इसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन. नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा. सिमिलरली बेंजीन प्लस टोलुइन, a solution of benzene and toluene, bromoethane and chloroethane, a solution of bromoethane and chloroethane are the common ideal solution. It has some properties. Ideal solution has some properties. First one is the enthalpy of mixing of the pure component to form the solution is 0. Delage mixing is 0. दो कंपोनेंट को मिलाने पर कोई हीट एनर्जी रिलीज नहीं होता है. नो हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड. Next one is the volume of mixing is also 0. That is del V mixing is equal to 0. It what does mean? The volume of solution would be equal to the sum of the volume of two components. Third property is AA interaction is equal to AB interaction is equal to BB interaction का. A मॉलिक्यूल्स ऑफ ई के बीच जो फोर्स लगेंगे वही फोर्स उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ए बी के बीच लगेगा और बी बी मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है. एंड इंटरेक्शन शुड बी सेम इन शेप, साइज एंड कैरेक्टर. ये सारी का शेप, साइज, कैरेक्टर सेम होंगे. फोर्थ वन इज जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स के बराबर होगा. सम ऑफ द कंपोनेंट्स के बराबर होगा. Total pressure is equal to sum of the partial pressure in the mixture. And the fifth characteristic is its components can be separated by fractional distillation. Its components can be separated by fractional distillation. Its components can be separated by fractional distillation method. Dear students, you know petroleum is also obtained by fractional distillation method. Petroleum components are obtained in different columns using fractional distillation method. So ideal solution is one which obeys Raoult's law, the mixture of normal hexane and normal heptane
forms ideal solution. If both the components are allowed to mix together, no heat will be released, no heat will be absorbed. So del H mixing is 0. And on mixing of two components, del V mixing is 0. It means the volume of solution would be equal to the sum of volume of two components. Third property is A interaction is equal to AB interaction, which is equal to BB interaction. Fourth one is total pressure is equal to sum of partial pressure, and fifth characteristic is its component can be separated by fractional distillation method. Dear students, a perfectly ideal solution is rare, but some solutions are nearly ideal in behavior. The liquid solvent must not form an azeotropic mixture. So we will discuss in detail what is azeotropic mixture in the next video. Now we will see non-ideal solution. This one is ideal solution with lots of example and their characteristic. Now we will study non-ideal solution. Such solution which does not obey Raoult's law over the entire range of concentration is known as non-ideal solution. It is difficult to rub. Dear students, you should not write that line. Non-ideal solution. Non-ideal solution is one which does not obey Raoult's law. A solution which does not obey Raoult's law is known as non-ideal solution. A mixture of or a solution of methanol and ethanol, chloroform and carbon tetrachloride. Chloroform is CaCl3 and carbon tetrachloride CCl4 forms non-ideal solution. Methanol and water, H2O and methanol, इस दोनों का जो सोल्यूशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है. H2O plus HCl or HNO3, H2O plus HNO3. So these are the non-ideal solution. A solution of water and nitric acid is non-ideal in nature. So non-ideal solution is opposite to ideal solution, hence properties of non-ideal solution will be del H mixing is not equal to 0, del V mixing is not equal to 0. Third one is AA interaction should not be equal to AB interaction or BB interaction in shape, size and character. Should be in shape, size and character. So AA interaction is not equal to AB interaction or BB interaction. So these are the properties of non-ideal solution. Non-ideal solution को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर उस मिक्सचर को कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा. अगर हीट रिलीज होता है फिर भी वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, अगर एब्जॉर्ब होता है फिर भी वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है. आप देखते हो, यू कैन सी दैट व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड is allowed to add into the water, what happens? Heat is released. If water is added to HCl,
a vast amount of heat is released. So you are advised to add hydrochloric acid into a large volume of water so that a dilute solution can be prepared. Non-ideal solution obeys positive as well as negative deviation. So what are positive and negative deviation? Let us see in detail positive and negative deviation. A solution of water and HCl, water and HNO3, acetone and chloroform are the non-ideal solution with negative deviation, though a solution of water and alcohol, chloroform and carbon tetrachloride are the non-ideal solution with positive deviation. So those mixtures, those components of solution which cannot produce heat can show non-ideal solution. So let us see what are the differences between non-ideal solution with positive and negative deviation. It is quite easy to understand positive and negative deviation. So let us see point-wise positive deviation, and here is negative deviation, and non-ideal solution in the top, non-ideal solution with positive deviation and negative deviation. So we have to distinguish H2O plus CH3OH or alcohol forms positive deviation, CCl4 and chloroform, a mixture of carbon tetrachloride and chloroform, is non-ideal solution showing positive deviation, though acetone is CH3CO CH3 and chloroform is CHCl3. So this is negative and this one is positive. So there is interaction between the two molecules of acetone and chloroform, and so that heat is released during mixing of components. So these are the example of non-ideal solution with negative deviation. Water plus HCl, hydrochloric acid or nitric acid, is an example of non-ideal solution with negative deviation. So the second point is delage mixing is greater than 0. It what does mean? Heat is absorbed. Heat is absorbed. Greater than 0, sorry.